This meeting is being recorded. Okay. Good afternoon, students. If you are audible, my voice, please inform on the chat box. And if you are getting the screen on your side, please confirm your side. If you are yes, okay, audible. Yes, yes. Today we are going to discussing very important concept. So all of you please be attention. The very important concept it is. Yes, yes. Okay. Okay. So first of all of you please change your name as per my guidelines. First, you have to add your date, today's date, and after that write the division, and after that write the roll number and the name. Okay. So you just do it right now just for 1 minute or 1 or 2 minutes. After that I will disable change your name. So all of you please do this. Just for 1 minute you just do this. So after that we start today's lecture. It is today's lecture. It is very important. Please all of you attention. Yes. Now all of you are changed our name according to that. Okay.
Okay, so we start today's lecture. Uh, so today it is. If anybody have the difficulties, please you can chat. Okay, you can message on chat box. Is it audible? Voice is clear. Yes. Okay. Okay. So yesterday we discussed. We are discussing the SQL language. What is SQL language and how that SQL language it contains different languages. So these are things we discussing in the previous lecture. We continue this SQL language afterwards because we have a completely second unit. It is depends upon the SQL. Okay, complete SQL second unit है. So वो हम उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड. ओके, so just for today's I would like to explain today a very important most of times in university this particular question is asked. Most of the times this question will be asked. What is that question is, explain the structure of database management system. Okay, or architecture of database management system. Okay, so you right now you are seeing that the architecture of our internal system, internals part, or maybe we can structure of the database system. Okay, so you can see this particular figure. Okay, so is it visible everyone, and it is readable the points what it is contains in that? If you are if it is visible each in readable each point, is it readable? Just text me. Okay, okay, okay. So if you are not visible, just you can able to zoom the screen and you can see that components. Okay, we will explain. We will go through this architecture from top to bottom. Okay, so top level से bottom level तक हम जा सकते हैं. Okay, so don't worry about this. So I will explain each and everything. So this is very important architecture. So for the database administrators as well as database persons, those who are working on this, okay, databases, it is very important. They have to know about the internal structure of a database. Okay, so database system means what I told earlier. What is that database system means? It is not a DBMS. DBMS is a software. Okay, so DBMS is it is a software, but the database system is different. Okay, database is different, database system is different, database management system is different. These three are not similar. Okay, these three are different concepts. So database system means, what is that system means? The system which contains the database management software. Database management software. If the system it contains the database management software, then we say that it is a database system. Okay, but basically क्या रहता क्या है उसमें, database system में रहता क्या है? So it is a system means it contains memory compulsory. So means disk, we need a disk, and also software. So software में components रहता है. Okay, logical components. So logical components क्या है वो भी रहता है. So like this, a database system means it is nothing but a database management software plus the memory, means nothing but the disk, and as well as the users including. Okay, so these all the things we together we say that it is a database systems. But how this database system contains some parts? Okay, basically we know that disk रहता है
एंड सॉफ्टवेयर भी रहता है, यूजर्स भी रहता है. ओके, सो बट एग्जैक्टली इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या है और कंपोनेंट्स का कनेक्टिविटी क्या रहता है. ओके, कनेक्टिविटी हियर. सो कंपोनेंट टू कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन कैसा होता है. ओके, सो लाइक दिस the so what the internal structure of the database system or internal components or architecture of database systems, database. So everything it is given. Okay, so in the screen you see that. So basically if you see that from the top, we will discuss from top to bottom. Okay, so in the top level layer, so it contains some rectangle boxes and some vowels. Okay, so some vowels are there and some rectangle boxes are there. So what is this? These are the a level. This is a level. Okay, we can say it is a one level. Okay. 1 minute. Okay, so this is one level. Okay, so and second level is, that is a user level. We can say it is a user level. And second level is query processor. Okay, query processor, this is the next level. Okay, so query processor is the next level. And the next level in the architecture, it is storage manager. Storage manager, so this is a third level in the architecture. And the fourth last one is the disk storage. Disk storage, these are the main four levels are there. First level is user level or maybe view level, we can say. And the second one is the query processor level. And query processor level, and next it is the storage manager. Storage manager level. And next one is the so disk storage. Disk storage, these are the four main layers are there. So we discuss these layers one by one. The first one is user level. First we discuss the user level. Okay, so means what type of users are involved at user level. Okay, and what type of programs are required at this level. Okay, so these particular details are given. So here, so in this level, okay, in this level these particular details are given. So first is users name. यूजर्स में हमको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूजर्स कौन सा यूजर्स ये डेटाबेस में काम कर सकता है. काम करने के लिए कौन सा यूजर्स रहता है. हम भी एक यूजर है. सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल. हम यूनिवर्सिटी में एग्जाम फॉर्म भरा है अभी. ओके, सो डेटाबेस रहता है बैकएंड में and we are entering the data into the database. So means database हम यूज कर रहे ना. so we are using the database, so we can say we are also be one of the user of the database. User of the database. So like this. So sometimes so admins रहता है. Okay, admin, system admin. Suppose if the technical issue कुछ हुआ है, so database में जाके वो काम करना पड़ता है. काम करने वाले कुछ admins रहता है. Means there are different category of peoples. Okay, and some peoples are there. Okay, so professors or maybe some suppose admin team है. Suppose admin team. Okay, administrative team. So administrative team भी database में login कर सकता है. Okay, उसमें भी काम कर सकता है. They are different अलग team है. So like this. So if you take a database for a just simple university database, so many type of users are working on the databases में काम करने वाले. Okay, so but ये categories हम so broadly we can categorize all into four main categories. First one is Navi users. Navi users are nothing but agent. Agent is a Navi user. Okay, agent is a Navi user. Agent means for example university database ले लो. For example हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डेटाबेस है. So उस डेटाबेस में suppose I want to
enter the all students information. Okay, मेरे पास फिजिकल एप्लीकेशंस आया, ये फिजिकल एप्लीकेशंस में डेटाबेस में अपलोड करना है. So how can I upload the data? Basically, so as a general technical people, I individually it is very difficult to enter the data into the database. That's why, so I have to take the help of some agents. Okay, for data entry operators को देना पड़ता है data. Okay, so the data entry operators are nothing but agents. उसके लिए हम एक अलग से एक application create करना पड़ता है. application उनको दिया तो so वो agents, so हमारा जो data है वो उसमें भरने वाले. Okay, that is agents. Okay, agents are we call as a navy users. Means they are not a users, general users नहीं है, administrator भी नहीं है, or maybe they are not a so technical peoples, they are just data entry operators. Okay, so agents, we can say it is a data entry agents. And tellers means so जो भी शॉप रहता है, शॉप में ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स रहता है, उस मशीन से भी हम डेटा जनरेट होता है. So वो डेटा भी डेटाबेसेस में ऑटोमेटिक स्टोर होता है. So टेलर्स, so these are also be टेलर्स. वेब यूजर्स भी रहता है. ओके, वेब एप्लीकेशंस रहता है, वेब एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद हमारा जो डेटा है वो अपलोड कर सकता है, वो भी वेब यूजर्स रहता है. ओके, so these are all the navy users. The users which are so working based on the particular an application interface. Here we say it is an application interface. एक application interface लेके okay उससे काम कर रहे डेटाबेस में, so उस लोगों को हम बोलने वाले navy users. Okay, so understand this navy users. Okay, ऑटोमेटिक टेलर मिशन से भी जो डेटा जाता है वो भी टेलर मिशन से, मीन्स एक मिशन के बाद बैठ के डेटा एंट्री करने वाले वो भी, एंड एजेंट भी, एजेंट जो भी अगर एजेंट रहेगा तो एजेंट थ्रू भी डेटा जाता है. एंड वेब यूजर्स सभी वेब यूजर्स जनरली जो भी हम वेब सर्फ इंटरनेट में जो भी हम काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे वो भी ये हो सकता है. ओके, these peoples we call it as a navy users. These users, they uses the application interface. You see this is application interface. This application interface से वो डेटा हाँ डेटाबेस में भरने वाले. Okay, these are the navy users and they uses the interface, application interface. Okay, next type of the users रहता है general users छोड़ के. These are the we call it as a general users. Okay, all general users जो भी हम database end users we call it as a end users. So अलग कुछ type of peoples are there. So some अलग peoples रहता है, वो peoples so database के ऊपर नहीं तो कुछ applications के ऊपर काम करने के लिए रहता है. Okay, application programmers. Suppose एप्लीकेशन आपको सपोज यूनिवर्सिटी डेटाबेस ले लो, आपको एक एप्लीकेशन का लिंक रहता है. ओके, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एक लिंक दिया रहता है ना वेबसाइट का, वो वेबसाइट का लिंक मींस वेब पेज, दैट पर्टिकुलर वेब पेज इट इज ए एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? सो दैट वेब पेज इज एन एप्लीकेशन. उस एप्लीकेशन कौन डिजाइन करने वाले? आप नहीं है, ऑलरेडी कोई तो टेक्निकल पीपल डिजाइन करके दिया आपको, but that people, okay, application programmers, we call it as application programmers. So these application programmers also they interact to the database because testing करना पड़ेगा ना. Okay, even for example first time, suppose when the application is implemented, at that time that application have to test it. Okay, actual database में डेटा जा रहा है क्या, कैसे जा रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, अगर मैं गलत एंटर डेटा किया तो गलत डेटा जाता है क्या, वेरिफिकेशन होता है क्या, कंडीशन चेकिंग होता है क्या, सपोज एज रिस्ट्रिक्शन किया, एज अगर मैंने 10 साल का एज डाला तो जाता है क्या नहीं, वो सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है ना. ओके, सो मीन्स हु विल वेरीफाई दिस? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स. ओके, डेवलपर्स दे विल so do this all operations. Okay, so that's why the application programmers is a one category. Application programmers is a one category.
So in this, so the applicant programmers, they write the programs directly. They write the programs directly. So by using some application programs, application जो भी some programs रहता है, उस application programs लेके so ये programs लिखने वाले, okay? So database के ऊपर data access कैसे करना है, कैसे data store करना है, कैसे so मेंटेन करना है, डिलीट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, ये सब कुछ एप्लीकेंट प्रोग्रामर्स करने वाले. वो कौन सा एप्लीकेशन यूज करके, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ओके, प्रोग्राम्स लिखना है. थ्रू प्रोग्राम्स ओनली दे विल इंटरेक्ट टू द so databases, not to application. You see the difference. The general users application through interact होता है, but here the applicant programmers are, they write the programs. Okay, एक प्रोग्राम लिख के वो डेटाबेस में कम्युनिकेट करने वाले, डेटाबेस को कम्युनिकेट करने वाले. ठीक है, so this is another type of the users, okay, or users, okay, application users. Next type of the category is the sophisticated users. Sophisticated users. So for example, university database ले लो, okay, just we are always we take the only our college university database, Savitribai Phule Pune University, okay. So suppose if you take a university database, in the university database सारे साल का डेटा रहता है, ओके. अभी इस साल का नहीं है, पिछले साल का रहता है, ऐसे भी 10 साल का, 20 साल का, कितना, जब से यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर डिजिटल हो गया तब का पूरा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2 days तक, ठीक है, आज तक जो भी ये डेटा है वो सब कुछ डेटाबेस में कंपलसरी रहता है. ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को ये डेटा, क्या डेटा है वो उनको नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, सो वही चाहिए. एंड यूजर्स को क्या चाहिए, डेटा एंट्री करना है, मॉडिफाई करना, वही चाहिए. बट सोफिस्टिकेटेड यूजर्स को अलग से काम रहता है. क्या काम रहता है, डेटाबेस को एनालिसिस करना पड़ता है. सपोज इस साल में कितना स्टूडेंट्स कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन लिया है, एंड इस मैकेनिकल ब्रांच में इस साल कितना स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है, और ओपन कैटेगरी वाला कितना एडमिशन लिया है, कैटेगरी में कुछ रहता है तो वो कितना एडमिशन लिया, बाहर का यूनिवर्सिटी से कितना लोग आया, बाहर स्टेट से कितना लोग आया. सो लाइक दिस, और पिछले साल का और हर साल का क्या क्या डेटा है, सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है. we have to analyze the data what it contains in the database. So but कैसे हम एनालिसिस कर सकता है, जनरली सो जनरल आदमी बैठ के कर नहीं कर सकता है. सो जो भी sophisticated users, we call it the sophisticated users, means some high level आदमी, okay, some scientist level or maybe some higher authorities, जो भी बैठता है वो लोगों के लिए सो ये एनालिसिस टूल्स यूज करके ये एनालिसिस कर सकता है. So that type of users we call it as a sophisticated users. Sophisticated users means the users the users which are as basically, so they will do some analysis, high level analysis करने के लिए बैठने वाले उस users को हम बोलता है sophisticated users. बट वो कैसे करने वाले, डेटाबेस को कैसे कम्युनिकेट करने वाले, इधर सो देखा तो क्वेरी टूल्स रहता है, क्वेरी टूल्स. बाय यूजिंग दिस क्वेरी टूल्स दे विल डू द एनालिसिस. ओके, बाय यूजिंग दिस क्वेरी टूल्स दे यूज द एनालिसिस. ओके, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द यूजर्स. नेक्स्ट इट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, अभी तक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ही नहीं आया. पहले यूजर कौन है, जनरल यूजर्स है. ओके, नेक्स्ट कौन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स है. ओके, डेवलपर्स, वी कैन कॉल इट एज डेवलपर्स, एंड यूजर डेवलपर. ओके, एंड सम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स मींस मैनेजमेंट लोग, वी कैन से इट इज ए मैनेजमेंट लोग. एंड नाउ टेक्निकल पीपल्स, एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेवल का टेक्निकल पीपल्स रहता है. Okay, they are different than the developers. They are different than the developers. Developers means कंपनी का people रहता है, वो डेवलप करके हमको देने वाले, यूनिवर्सिटी को देने वाले. They are called the applicant programmers. But administrator कंपलसरी टेक्निकल, यूनिवर्सिटी का टेक्निकल आदमी रहता है.
ओके। सो मेंटेन करने के लिए डेटाबेस जो भी हम क्रिएट किया उस डेटा को मेंटेन करने के लिए सो एडमिन रहता है। ओके। सो दैट पर्टिकुलर एडमिन इट इज called as a database administrator. Okay, so administrator का role क्या क्या रहता है? So here the one of the question is came once again. What is the role of the administrator? Database administrator क्या क्या कर सकता है administrator? So database create कर सकता है. Okay, database को create कर सकते हैं. Database मतलब क्या है? Table. Because it is a relational database model. Okay, we are using right now only relational database model. So in the relational database model, so data is stored as a tables in the memory. Okay, so tables कैसे create करना है, कैसे modify करना है, okay, and कौन सा rows delete करना है, कौन सा rows को shift करना है एक database से दूसरा database को. So like this the administrator का काम क्या है? So database create करना है, database maintain करना है. And one more another important task है. क्या है task? Granting the privileges. Granting the privileges. For example, so मैं student है, okay, or I want to get the some data from the database. So is it possible to access everything data? Because I am a student, is it allowed for the from the university to access all the data? Means कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेटा, कॉलेजेस का डेटा, फैकल्टी का डेटा, सब कुछ डेटा हमें को परमिशन रहता है क्या एक्सेस करने के लिए? एज ए स्टूडेंट it is not possible, it is not also important. Okay, means I am connecting to the database, I am accessing because by using my application, my login. So but I don't have the privilege to access some other data. मेरा डेटा है वही मैं एक्सेस कर सकता है, so others का डेटा मैं नहीं एक्सेस कर सकता है. So like this, so means you have a privileges. Okay, you have some set of privileges so that you can only access your data because of your as per your privileges. So like for example, I am a faculty. Okay, suppose if I am a faculty, so I cannot able to access all information of students, only some few columns I can access. Okay, like student name, roll number and class. Okay, and some marks, my subject related marks, only this particular data I can able to access. For that again, because of my user have their may वो मेरा खुद का privileges रहता है. Okay, like this different users have different privileges. Different users have different privileges. Okay, so who can give these privileges? मेरे को इस सिर्फ ये इस डेटा एक्सेस करना है. ओके, उनको सपोज एक स्टूडेंट एक यूजर है, उसको सिर्फ ये डेटा एक्सेस देना है. ओके, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल एडमिन ऑफिस है, उसको इस डेटा उनको एक्सेस करने के लिए देना है. सो लाइक दिस, so who can decide this, giving the privileges, giving the permissions on the database? Only the database administrator task hai. Okay, database administrator, so they grants the privileges, they revokes the privileges to the different users, so so that according to that they will access the data from the databases. Okay, and next task, sorry, एक minute.
Okay. Okay. Sorry. So office call, right? Okay. Okay, we are discussing that actually the role of the database administrator. Okay, so in this administrator role is, so first thing is database create karna, second is the granting the privileges, and the third one is security, providing the security from the databases. Okay, this is also be one of the role, because if you're not having providing the security for the database, so it is also be one of the big problem. We will get a big problem for the database. Okay, that's why the administrator task क्या है, वो database को security भी provide करना पड़ता है. Okay, these are some few, so the roles of the administrator. Okay, so these are the users level, means these are different type of users. One is the Navi users. Navi users are nothing but the agents, web users, okay, tellers. These are all the web one type of the users. What happened? Oh, okay. Okay, so this is Navi users and application programmers. Next category of the users is application programmers. So in this application programmers, so they will write those programs to communicate to the databases. Okay, and the next type of the is sophisticated users. The sophisticated users are nothing but data analyst. Okay, by using the query tools, they will communicate to the database to get the analysis of the database. And next is database administrators. They basically administrators are communicates by using some administrator tools. उनका कुछ अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर यूज करके वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम करने वाले. ठीक है. So these are different users. Okay, and next this is the first level of the database structure. Database structure mein first level hai users. Okay, different category of users. Next we go to the next level. Actually we don't have that much time. Okay, so we will continue this. So next levels, query processor. Query processor level में जो भी queries आया है, जो भी programs आया है, वो programs कैसे execute करने वाले. Okay, and next storage manager. Storage manager actually जो storage memory का maintain कैसे करने वाले, कैसे क्या क्या task रहता है, वो next level. And the fourth level is the disk storage. Okay. These are the 4 levels. We will discuss the remaining 3 levels in the next class, because it is not sufficient time. We don't have sufficient time for today. So if you have any doubts right now, please ask. If you raise your hand, I will allow you for asking the questions for this last 5 minutes. And meanwhile, everybody have to take the screenshot and upload it on the Google Classroom. Okay, don't forget this. This is a regular practice. Either we are taking the lectures on Zoom application, or maybe if you are taking the lectures at any other applications. अभी तो हम Zoom use कर रहे, future में दूसरा platform हम change करने वाले. Okay, so we will let you know the details in soon. So कौन सा भी application use करो, but आप screenshot तो लेना पड़ता है. Screenshot का upload करना पड़ता है Google Classroom में. Okay, because already we started some regular practice on the Google Classroom, so we need to continue this. Okay, so that's why. So don't forget this. Always you have to so participate on the Google Classroom activities. Okay, these activities will remain continued. Okay, and the so let me ask, anybody have the doubts? Please raise your hand. I will clarify your. Okay, users का क्या क्या doubts लग रहे थे users के बारे में. So this is an open platform. Everybody can ask. Okay. No doubts. I am waiting for your response.
So you can you can unmute yourself and you can ask directly also if you have any doubts. And soon we are going to start the SQL in the next classes. So at that time, everybody please take the notes and note down the comments what I am explaining. So at that time of the SQL language. SQL language पूरा second unit है, पूरा के पूरा second unit SQL language. उस language में लेने वाले SQL from scratch से हम लेने वाले हर कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे टेबल कैसे क्रिएट करना है, परमिशंस कैसे ग्रांट करना है, वो हम में ग्राउंड लेवल से लेने वाले. सो कंपल्सरी मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर दैट. Okay. Just for writing some examples of okay, in future when you coming back to the college at that time for practicing purpose also it is very useful. Okay, if you maintain the proper notes. Okay. Okay, so can raise any questions. If you have any questions, please raise and ask. Up to now, we completed some concepts. If you have any doubts on the previous classes, please go through that concepts and you can ask the previous concepts also. And one more thing is, I already shared previous classes recordings. Okay, previous classes recordings on the Google Classroom. So if anybody are missing the previous lectures, you just go through that Google Classroom and you can find the previous all lectures. Okay, and also I shared one assignment. This Saturday is the last date, so everybody have to write that assignment and submit on the Google Classroom. So you have to write your name, roll number, and the division and sign on that. Okay, so and date also, if it is have date also write करना है. So हर पेज में ऐसे लिखना है. So and क्वेश्चन को आंसर्स बराबर टेक्स्ट बुक्स भी मैंने लिंक्स दिया है जो भी यूनिवर्सल. Okay, these are not the local books, they are universal. सारे जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो यूनिवर्सिटीज में सो प्रेफर कर रहे हैं ना, वो टेक्स्ट बुक्स मैंने शेयर किया है. very important text books in your life also you can keep this as a library. Okay, so that type of the books I have shared to all of you. इसमें main important हमारा यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक है. Okay, syllabus scratch course वो टेक्स्ट बुक है, main टेक्स्ट बुक. एंड सेकंड टेक्स्ट बुक भी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है, रघुराम कृष्णन. इट इज आल्सो very important. एंड वन मोर टेक्स्ट बुक है Elmasri Nawate. This is also very excellent book. Okay, you can easily understand by reading the textbook. Okay, easy language में रहता है. And Caesar date is also one of the textbook which I shared. Very excellent books. These are all the excellent books I shared. Okay, so if you study these books, you